Everybody present here today. Shivain Dhania, founder of KrisNEX, is back here again. This week, the topic: stop listening to people. See, don't get me wrong. In the intro, I talked about that I'll not speak something dreamily or heavenly. I'll talk about the ground reality on which the life is based on. The reality is, most people say every single person on the earth is a result of his own only. That हर इंसान की एक सोच होती है और वो सोच उसको डिफाइन करती है. And I'm in favor of that. Okay, but the thing is, not only your thoughts define you, the type of videos you watch, the type of movies you watch, the kind of people you live with. क्या वो कहते हैं कि you are the average of the 5 people you live with, and that's really interesting topic. इस पे एक अलग podcast आएगा. You're the average of the 5 people you live with. What videos you watch, what music you listen, what habits you have, what thoughts you have, what choices you take. You are actually defined by every damn moment in your life. By every single thing which is happening to you or you are doing, that's defining you. Okay, so now when there is a successful person, लोग कहते हैं कि यार ये सबसे अलग है, and I mean it, सबसे अलग है. But you know why वो अलग है? क्योंकि what he does is, उसके कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, 3, 5, 8, 10. There are some role models. Okay, तो वो जो सक्सेसफुल तो वो जो पर्सन होता है, फॉर एग्जाम्पल टेक इलॉन मस्क. So he is currently the most successful human being on the planet. If we take financially, mentally, and socially and everything, he's the most successful. So he has some role models. Okay, the number one, Steve Jobs, then it's Benjamin Franklin, then Bill Gates, then Larry Ellison. These 4 role models are there, and Elon Musk is actually a well formed or compound mixture of these 4. Okay, so he has something like 50% Steve Jobs, 30% Bill Gates, 20% Benjamin Franklin, and 1% or 10% Larry Ellison. So Elon Musk is like the best version out of the 4. If we compile those 4 people, then Elon Musk is the best version out of them. Okay, so this is how successful people are made. They have some role models. Okay, and you should have to. Okay, now there may be 2 role models, there may be 3, there may be 5, there may be 10, and you have to extract the best out of them. Okay, and instead of those role models, don't listen to anyone. If you want to listen, just think 100 times before doing a job. यार मुझे बहुत suggestions मिलते हैं daily, but before doing, मैं ये नहीं कह रहा कि मत सुनो, मैं बस कह रहा हूँ before doing something, before believing them, think about 100 times. Okay, about 100 times literally. तो एग्जाम्पल्स देते हैं. 1950s के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर लीवी फॉरेस्ट, he made a statement in which he told that no matter how far science will be improved, no matter how far technology will be improved, a man cannot reach to the moon. In 1955 he said that a man cannot cross the boundaries of the earth, and people believed him. बट यार एक बहरे ने उसकी बात सुनी नहीं. ठीक है, एक बहरा था जिनको उनकी बात समझ नहीं आई, एंड ही सेड कि यार मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं, मेरा तो सपना है, मुझे पहुंचना है, मैं पहुंच के दिखाऊंगा. 1969 यार बस 14 साल बाद he reached to the surface of moon. Stop listening to people. Believe me, you're doing a great blunder if you're giving up on your dreams if someone is telling you to give up और तुम सोचते हो कि वो सही बोल रहे हैं. Even the people who you think are successful, वो भी आपको कुछ बात बता सकते हैं जो गलत हो सकती है. इसलिए मैंने कहा है कि Elon Musk is not the total Steve Jobs. Elon Musk is not 100% Bill Gates. Elon Musk ने सिर्फ उनका बेस्ट पार्ट लिया जो उनको लगता है कि सही है, इसलिए he took 40% of Steve Jobs. Okay, so you should even of successful people, you should take the best parts or the parts you think which is good. Okay, life is all about what you think and believe. Okay, life is all about what you think and believe. एक स्टोरी सुनाता हूँ. एक बहुत बड़ी यूएस कंपनी थी यार. It was a shoe manufacturing company, and they decided to set up their factories in Japan. Okay, and that CEO, he had a secretary or like general manager type person, and he sent that general manager into Japan. और he said यार पता करके लाओ कि वहाँ के लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स कैसे लगते हैं. अगर कुछ लोगों को अच्छे लगेंगे तो यार हम वहाँ फैक्ट्री लगा देंगे. So that manager went, and उन्होंने देखा कि जापान में यार उस टाइम 1980s के टाइम पे people used to walk barefoot. वहाँ जूते चप्पल कुछ नहीं होता था यार, लोग ऐसे ही चलते थे. And that manager called the CEO immediately. सर आप क्या कर रहे हैं? And CEO said what? And that manager said कि सर आप पैसे बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ तो कोई जूते नहीं पहनता, तो सब पागल है, यहाँ सब नंगे पैर चलते हैं, सर आप मत करिए, the money will be wasted. And that CEO said okay fine, come on. Then manager came to US, and the CEO after a few months sent another manager, and that manager went to Japan, and he saw that nobody was wearing any shoes, they were all barefoot. And then manager called the CEO and he said, sir आप क्या कर रहे हैं?
CEO said, I want to set up a company. I want to set up a factory there. And that manager said, sir, but nobody wears shoes here. Everybody's barefoot. आप कितने की factory लगाना चाहते हैं यहाँ पे? And CEO said, well, I was planning to build a 5,000 crore factory. And that manager said, sir, 15,000 crore का लगा दीजिए. यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, पूरी दुनिया तो यही है. Are you getting it? It's all about the mentality यार. एक चीज को दो अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है. The first one thought कि यहाँ पे हमारा मार्केट ही नहीं है क्योंकि कोई जूते नहीं पहनता, और एक ने सोचा है कि यार पूरा देश जूते नहीं पहनता, हम पहनेंगे उन्हें जूते. द होल जापान millions of people, that company gained a monopoly over them. सबने यार एक ही ब्रांड के शूज पहने. That's how you become successful. You make your own way, and you have some sort of principles, and you have your mentality. Stop listening to other people. So Lord Kelvin, सब लोगों ने सुना होगा, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Lord Kelvin, one of the biggest scientists, he said that objects that are greater or objects that are heavier than the air cannot fly. जब लोगों ने सोचा कि यार मैं प्लेन बनाऊंगा, उन्होंने कहा कि यार अगर प्लेन हवा से भारी है तो उड़ नहीं सकता, प्लेन को हवा से हल्का बनाना पड़ेगा. प्लेन को तुम हवा से हल्का बना दोगे, उसमें इंसान कैसे बैठेगा, क्योंकि वो तो हवा से भारी होगा. एंड ही सेड दैट स्टॉप डूइंग दीस रिडिकुलस थिंग्स. यार वो तो थर्मोडायनेमिक्स में चैंपियन थे, उनको तो सब कुछ नॉलेज थी, एयर की, लिक्विड्स, गैसेस की, उनको तो डेंसिटी सबकी नॉलेज थी. ही सेड दैट इट कैन नॉट बी बिल्ट. अगेन यार दो लोग थे जिन्होंने उनकी बात नहीं सुनी. दो लोग थे जो बहरे हो चुके थे उनके लिए, एंड उन लोगों ने जो साइकिल के एक्स्ट्रा पार्ट्स थे उससे एक प्लेन बना डाला. यार दुनिया इंटेलिजेंट लोगों ने नहीं बदली है, दुनिया जीनियस लोगों ने नहीं बदली है, दुनिया पागलों ने बदली है. द वर्ल्ड इज नॉट बिल्ट, द वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटेड, द वर्ल्ड इज नॉट चेंज, द वर्ल्ड इज नॉट revolutionized by the people who are educated enough. It is revolutionized by people who are crazy, who believed in themselves when but nobody even thought of believing them. Everything changes when you change the way you think. I repeat, everything changes when you change the way you think. कोरिया में यार एक आदमी को ट्रेजन की सजा मिली. He got a punishment of betraying the country. Korean army decided to bring a snake, like anaconda type, big snake. I guess it was Russell's viper or something like that. It was a really poisonous snake. And that man was blindfolded, and he was ready to be bit by a snake, and he knew that his death is near. And when they were bringing the snake died in the journey, and they thought that what we should do now, and they thought that maybe we should start torturing him with some pins. Okay, it sounds really cruel, but North Korean army is, it is what it is. So they thought that we should start torturing him by some pins. Okay, तो उन्होंने दो पिन ली और उन लोगों ने उसके गाल पे एक ऐसे पिन लगाई, and that man died. You know why? क्योंकि उस आदमी को पता नहीं था यार कि सांप मर चुका है. उस आदमी को लगा he is bit by a snake. Everything changes when you change the way you think. Yeah, read books. It's really important. ये एक option नहीं है, it's compulsion. Read books. This is probably one of the greatest books I've ever read. The Power of Your Subconscious Mind. This book teaches a lot. इसमें एक बहुत अच्छा incident था यार. मतलब this book is all about teaching through real life incidents. Okay. तो इसमें एक incident था यार. एक शायद 19-year-old woman थी, और she saw a bag on a shop, और शायद it was था या किसी बड़े ब्रांड का, शायद कप्रीसी टाइप. तो एंड शी वाज थिंकिंग कि यार ये तो मुझे मिल नहीं पाएगा, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, इट इज़ रियली एक्सपेंसिव. एंड शी रिमेंबर्ड कि ये जो जोसेफ मर्फी हैं, द राइटर, ही हैज़ गिवन वन स्पीच जिसमें उन्होंने कहा था, नेवर फिनिश a नेगेटिव सेंटेंस, ऑलवेज फ्लिप इट इमीडिएटली एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट पॉजिटिवली. एंड दैट वुमन सेड दैट हाउ कैन आई अफोर्ड इट, आई रियली वांट टू अफोर्ड इट, मैं कैसे अफोर्ड करूँ, मुझे वो बैग चाहिए, एंड आई रियली वांट दैट बैग. और शी स्टार्टेड वेटिंग फॉर इट डेस्परेटली, एंड शी थॉट कि मुझे सच में यार वो बैग चाहिए. एंड शी स्टार्टेड वर्किंग रियली हार्ड. उनको ऑफिस में प्रमोशन मिली, एंड शी स्टार्टेड गैदरिंग इन मनी. ओके, उनको दे वाज आई थिंक हर बर्थडे व्हेन हर फैमिली केम, और उसको एक गिफ्ट मिला. उन्हें गिफ्ट रैप खोला, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट बैग दैट शी वांटेड. शी गॉट द बोनस, शी गॉट द एक्स्ट्रा मनी, एंड शी गॉट द बैग फॉर फ्री. यार मैं शायद 10वीं बार बोल रहा हूँ यार, बट आई स्टिल से एवरीथिंग चेंजेस व्हेन यू चेंज द वे यू थिंक. मैं किसी और का क्या बताऊँ, मैं खुद का बताता हूँ. व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, आई वाज बिगनिंग द 8th क्लास यार. 7th मैंने जस्ट खत्म करा था, एंड आई वेंट टू दिल्ली, माय होम टाउन. स्कूल खुलने से पहले 15 दिन की छुट्टी थी, एंड आई वाज जस्ट क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, एंड आई फेल डाउन, एंड आई थॉट, मुझे लगा चक्कर आ गए होंगे यार, भोपाल से दिल्ली लंबी ट्रेन थी. द नेक्स्ट डे आई अगेन फेल, एंड आई थॉट दैट आई शुड सी अ डॉक्टर इमीडिएटली. एंड द डॉक्टर, यार पहले 10 दिन तक उनको समझ नहीं आया कि हुआ क्या. आई वेंट टू भोपाल,
आई केम बैक टू भोपाल और यहाँ कुछ डॉक्टर को ये समझ आया कि यार इस डिसीज़ का नाम है गिलियन बेयर सिंड्रोम, बट दे डिडंट नो हाउ टू ट्रीट इट, हाउ टू क्योर इट. Then I again went to Delhi because there are more experts doctors there. And the greatest hospital in India, यार अगर दो हॉस्पिटल्स इंडिया में आप बोलो जो बेस्ट है, एक तो अपोलो है और गंगाराम हॉस्पिटल है. एक these are the two biggest hospitals of India. And I went to गंगाराम हॉस्पिटल and I was admit. जैसे मैं गया उन्होंने फॉर्म मुझे एडमिट करा और उन्होंने कहा कि यार आप 15 दिन से जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में इनको घुमा रहे थे और इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ. दैट वायरस वॉज ओनली इन हिज लेग्स. अब वो वायरस पूरी बॉडी में आ चुका है. एंड धीरे धीरे करके यार मेरा मूवमेंट बंद हो गया. एंड आई कुडंट, चलना तो दूर की बात है, आई कुडंट स्टैंड, आई कुडंट सिट. मैं यार बेड रिडन हो गया था. मैं 2 हफ्ते हॉस्पिटल में था, मैं पूरे टाइम बेड पे था. एंड डॉक्टर सेड कि यार इसकी कंडीशन ख़राब है एंड 4 साल लगेंगे गेट टोटली क्योर. आई मीन चलना फिरना तो यार कुछ महीनों में स्टार्ट हो जाएगा, टोटल क्योर होने के लिए 4 साल लगते हैं उसको. मैंने गूगल पे देखा, गूगल में एवरेज टाइम दिया था 4 years. एंड एवरीवन बिलीव्ड कि यार इसके 4 साल बर्बाद हो गए. आई वाज इन 8th क्लास. उन्होंने सोचा 8th 9th 10th 11th 12th तक मैं ठीक होऊंगा. And that was, I guess, February 2016. Everyone believed that I will be cured in February 2020. Believe me, in October 2016, just around 8 or 9 months after that, I was the vice captain of my school cricket team. मैं आज 13वीं बार बोल रहा हूँ, मैं 14वीं बार बोलूँगा. Everything changes when you change the way you think. Actually, that was the real topic for today. Actually, हमने start किया था कि ignore the audience. The real thing which I wanted to talk is, या डोंट थिंक दैट समवन एल्स विल डिफाइन यू. डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मतलब यार, गूगल क्या कह रहा है मुझे नहीं मतलब. उनने एवरेज कहा था और मुझे दुनिया की सबसे बड़ी इंसल्ट लगती है यार जब मैं देखता हूँ कि आई थिंक दैट आई एम एवरेज एंड आई नो दैट आई एम मेड टू डू ग्रेट थिंग्स इन द फ्यूचर. सो आई वर्क डे एंड नाइट यार. उन्होंने कहा था कि दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करो. बिलीव मी, मैं 15 घंटे करने लगा था. एक टाइम था कि मेरा सिर्फ 2 काम थे यार, एक हैरी पॉटर पढ़ना, एक एक्सरसाइज करना. तो तुम बोलो कि तुम 4 साल भागोगे नहीं, इट रियली हर्ट. और मुझे यार मैंने एक कोट पढ़ा था कि यू डोंट फाइंड योर फ्यूचर, यू एक्चुअली क्रिएट योर फ्यूचर. तो मैंने सोचा यार मुझे फ्यूचर बताया जा रहा है, आई एम फाइंडिंग दैट माई फ्यूचर इज डिप्रेसिंग. 4 साल डिप्रेसिंग है. सो वाई शुड आई नॉट क्रिएट इट? एंड आई क्रिएटेड इट. बिलीव मी, 6 महीने के अंदर आई वॉज रनिंग लाइक हेल. दैट ईयर 8th क्लास में फाइनल एग्जाम्स में हमारे स्कूल के फिजिकल एजुकेशन में एक रेस हुई थी, in which I got 2nd position in the class of 25 boys. Okay, so it's about, you're not confined to a particular set of limit. You can do limitless, you can do insanely limitless. You just have to trust yourself, you just have to believe yourself, you have to just think that nobody else make your life, only you can. यार दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है, प्लीज़ लाइफ में कभी हार मत मानना यार, कभी मत मानना. अभी तो इस परिंदे की उड़ान बाकी है, अभी तो मेरा इम्तिहान बाकी है. अभी तो लांगा है मैंने समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली. और प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स, इज देयर एनी मिस्टेक और यू वांट समथिंग टू बी इम्प्रूव्ड, एंड आई विल श्योरली वर्क ऑन दैट. सो टिल देन, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीक. टिल देन, थैंक यू.